से ही पूछना। डाउनलोड नाउ। बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा। प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा। When and why, ROI। अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। डाउनलोड नाउ। 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है, पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. नौकरी for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी। करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट। So, what do you wanna play? They won't get it. We do. नौकरी for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई। वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है। माय गॉड, हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए, सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट। पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए नो किड्स प्लीज। थैंक गॉड, सेम हियर। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए, सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट। पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, राइजिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गुक्कल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। डाउनलोड नाउ। बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा। प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा। When and why, ROI। अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। डाउनलोड नाउ। 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है, पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. नौकरी for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी। करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट। So, what do you wanna play? They won't get it. We do. नौकरी for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई। वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है। माय गॉड, हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए, सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट। पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए नो किड्स प्लीज। थैंक गॉड, सेम हियर। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए, सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट। पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, राइजिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गुक्कल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। डाउनलोड नाउ। बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा। प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा। When and why, ROI।
अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है, पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. नौकरी for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी। करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट। सो व्हाट डू यू वांट टू प्ले? They won't get it. We do. नौकरी for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आए। वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है, बाय गॉड। हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए, सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए नो किड्स प्लीज। Thank God. Same here. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए, सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, राइजिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा, प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा। When and why, ROI। अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है, पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. नौकरी for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी। करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट। सो व्हाट डू यू वांट टू प्ले? They won't get it. We do. नौकरी for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आए। वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है, बाय गॉड। हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए, सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए नो किड्स प्लीज। Thank God. Same here. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए, सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, राइजिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा, प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा। When and why, ROI। अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है, पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश?
They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी. करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट. So, what do you wanna play? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई. वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है. बाय गॉड. हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए. सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट. पहले बात फिर जीवन भर का साथ. डाउनलोड नाउ. बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे. मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 years के लिए नो किड्स प्लीज. Thank God. Same here. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए. सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट. पहले बात फिर जीवन भर का साथ. डाउनलोड नाउ. बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, राइजिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल गुग्गल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा. अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना. Download now. बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा. प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा. When and why, ROI. अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना. Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है. पैसे के पीछे मत भाग. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी. करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट. So, what do you wanna play? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई. वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है. बाय गॉड. हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए. सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट. पहले बात फिर जीवन भर का साथ. डाउनलोड नाउ. बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे. मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 years के लिए नो किड्स प्लीज. Thank God. Same here. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए. सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट. पहले बात फिर जीवन भर का साथ. डाउनलोड नाउ. बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, राइजिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल गुग्गल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा. अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना. Download now. बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा. प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा. When and why, ROI. अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना. Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है. पैसे के पीछे मत भाग. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी. करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट. So, what do you wanna play?
They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई। वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है। बाय गॉड, हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 years के लिए नो किड्स प्लीज। Thank God. Same here. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, प्राइसिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा, प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा। When and why, ROI। अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है। पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी। करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट। सो व्हाट डू यू वांट टू प्ले? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई। वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है। बाय गॉड, हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 years के लिए नो किड्स प्लीज। Thank God. Same here. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, प्राइसिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा, प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा। When and why, ROI। अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है। पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी। करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट। सो व्हाट डू यू वांट टू प्ले? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई। वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है। बाय गॉड, हमारे यहाँ तो नहीं बनती,
लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना? जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 years के लिए नो किड्स प्लीज। Thank God. Same here. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, प्राइसिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा, प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा। When and why, ROI। अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है। पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी। करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट। सो व्हाट डू यू वांना प्ले? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई। वेजिटेरियन हूँ, पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है। बाय गॉड। हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना? जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 years के लिए नो किड्स प्लीज। Thank God. Same here. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, प्राइसिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा, प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा। When and why, ROI। अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है। पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी। करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट। सो व्हाट डू यू वांना प्ले? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई। वेजिटेरियन हूँ, पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है। बाय गॉड। हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना? जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 years के लिए
No kids, please. Thank God. Same here. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट। पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, राइजिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल गुग्गल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा, प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा, व्हेन एंड व्हाई ROI। अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है। पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी। करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट। सो व्हाट डू यू वांट टू प्ले? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई। वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है। बाय गॉड। हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट। पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना, दौड़ना, गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 years के लिए नो किड्स प्लीज। Thank God. Same here. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट। पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, राइजिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल गुग्गल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा, प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा, व्हेन एंड व्हाई ROI। अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट हो करना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है। पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी। करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट। सो व्हाट डू यू वांट टू प्ले? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई। वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है। बाय गॉड। हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट। पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना, दौड़ना, गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 years के लिए नो किड्स प्लीज। Thank God. Same here. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए। सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट। पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा,
फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, प्राइसिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड होकर ना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा, प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा, व्हेन एंड व्हाई ROI। अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट होकर ना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है, पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. लास्ट ईयर ही तो प्रमोशन हुआ था, हर बारी थोड़ी। करियर T20 नहीं है संजू, इट्स टेस्ट क्रिकेट। सो व्हाट डू यू वांट टू प्ले? They won't get it. We do. NAUKRI for the ambitious. गीत और आदित्य जीवन साथी के फ्री चैट पे घंटों से बातें कर रहे हैं, पर ट्रेन पटरी पे अब आई। वेजिटेरियन हूँ पर बचपन से बिरयानी का बहुत क्रेज है, बाय गॉड। हमारे यहाँ तो नहीं बनती, लेकिन बाहर खाने चलेंगे ना। जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए, सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बनी और नैना 2 दिन से जीवन साथी पे बात चल रही है, लेकिन दोनों की वाइब मैच हुई ऐसे। मैं उड़ना दौड़ना गिरना भी चाहती हूँ, पर नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए नो किड्स प्लीज। Thank God. Same here. जरूरी बातें पहले ही हो जानी चाहिए, सिर्फ जीवन साथी पे है फ्री चैट, पहले बात फिर जीवन भर का साथ। डाउनलोड नाउ। बाजार में पूछेगा, परिवार में पूछेगा, फैसिलिटी पूछेगा, लोकेलिटी पूछेगा, क्लब की वाइब पूछेगा, बाथटब पूछेगा, ईस्ट वेस्ट फेसिंग पूछेगा, प्राइसिंग वाइसिंग पूछेगा, अंकल दुक्कल से पूछेगा, बाबा गुग्गल से पूछेगा। अरे कब तक पूछते रहोगे? जब घर अपग्रेड होकर ना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. बिल्डर से पूछेगा, डीलर से पूछेगा, साइट पे पूछेगा, जाके साइट में पूछेगा, प्रेफर्ड यूनिट पूछेगा, सारे बेनिफिट पूछेगा, व्हेन एंड व्हाई ROI। अरे कब तक पूछते रहोगे? घर में इन्वेस्ट होकर ना 99 एकड़ से ही पूछना। Download now. 15% इंक्रीमेंट बढ़िया तो है, पैसे के पीछे मत भाग। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तुझे कछुआ बनना है या खरगोश? They won't. Good evening, all. Proceedings of this meeting are being recorded. During the meeting, the participants would be on mute. I now hand over the proceedings of the meeting to Ms. Jaya Bhatia, Company Secretary and Compliance Officer of INFOEDGE India Limited. Thanks, Swapnil. Good evening, everyone. I, Jaya Bhatia, Company Secretary and Compliance Officer, participating in this meeting from Noida, welcome you all to the 29th Annual General Meeting of INFOEDGE India Limited. On behalf of all the members present at this meeting, I extend a warm welcome to Mr. Kapil Kapoor, our esteemed Chairman, and to the respected members of Board of Directors. Now I request Mr. Kapil Kapoor to kindly commence the proceedings of the meeting by addressing this esteemed virtual audience on behalf of the board. I request you all to please welcome Mr. Kapil Kapoor, who is presiding over this meeting from Hong Kong. Thank you, Jaya. A very good evening, dear shareholders, my fellow board members, other stakeholders and dignitaries present in this meeting.
I welcome you all to the 29th Annual General Meeting of the company. I trust that you and your families are in good health. Pursuant to the circulars issued by the MCA and SEBI, the Annual General Meeting is being held through video conferencing facility provided by National Securities Depository Limited. We have the requisite quorum present through video conference to conduct the proceedings of the meeting. Participation of members through video conference is being reckoned for the purpose of quorum as per the circulars issued by MCA and Section 103 of the Companies Act 2013. The quorum being present, I call this meeting to order. I'm pleased to introduce the members of the board who are present at this meeting. I would also request each member acknowledge their introduction as I present their name. Beginning with Mr. Sanjeev Bhikchandani, founder and executive vice chairman of the company, attending the AGM from Noida. Mr. Hitesh Oberoi, co-promoter, managing director, and chief executive officer of the company, attending the AGM from Noida. Mr. Chintan Thakkar, whole-time director and chief financial officer of the company, attending the AGM from Noida. And Mr. Pavan Goyal, whole-time director and chief business officer, NAUKRI, also attending the AGM from Noida. Ms. Geeta Mathur, an independent director of the company and chairperson of the Audit Committee, Corporate Social Responsibility Committee, and the Risk Management Committee, attending the AGM from New Delhi. Mr. Sharad Malik, an independent director of the company and chairman of the Nomination and Remuneration Committee, is attending the AGM from Los Angeles in the US. Ms. Aruna Sundarajan, an independent director of the company and chairperson of the Stakeholders Relationship Committee, attending the meeting from Idukki in Kerala. And Mr. Arindam Kumar Bhattacharya, an independent director of the company, attending the AGM from New Delhi. Mr. Sanjeev Sachar, an independent director of the company, attending the AGM from Gurugram. And Mr. Ashish Gupta, independent director of the company, is unable to attend the meeting due to prior commitments and has sought leave of absence. In compliance with the requirements of the Secretarial Standard 2 on general meetings, the representatives of the statutory auditors and the secretarial auditors are also present in the meeting through video conferencing. We also have other key executives of the company attending the meeting from their respective locations. Now I request our company secretary, Ms. Jaya Bhatia, to read the arrangements made for the members at this 29th AGM. Thank you, sir. The company has enabled the members to participate at the 29th AGM through the video conferencing facility. The facility for joining this meeting through video conference is made available for members on first-come, first-served basis. The proceedings of this meeting are being webcasted live for all our shareholders as per the details provided in notice to this annual general meeting. The proceedings of this AGM shall be deemed to have been conducted at the register office of the company. The registers of directors and key managerial personnel, the register of contracts or arrangements, and other documents mentioned in the AGM notice have been made available electronically for the inspection during the AGM. Members seeking to inspect any of these documents can send their request to investors@naukri.com. As the AGM is being held through video conferencing, the facility for appointment of proxies was not applicable, and hence the proxy register for inspection is not available. The company has received requests from few members to register them as speakers at this meeting. Accordingly, the floor will be open for these members to ask questions or express their views, and we will facilitate this session once the chairman opens the floor for questions and answers. It may be noted that the company reserves the right to limit the number of members asking questions depending on the availability of the time at this AGM. Members can also post their views or questions on communication box and send their queries on email ID investors@naukri.com, and the company will respond to the same within 15 days. The company has provided the facility to cast votes electronically on all resolutions set forth in the AGM notice. Members who have not cast their votes yet electronically and who are participating in this meeting will have an opportunity to cast their votes during the meeting through the e-voting system provided by the NSDL. The members may note that the proceedings are also being recorded for the compliance purposes. Please do not disclose any personal information or personally identifiable information belonging to you or any other person that has no bearing on this meeting. The recorded video of the proceedings of this meeting will be available on the website of the company and NSDL. The transcript of the AGM will also be uploaded on the website of the company.
Thanks a lot, Jaya. The company has taken all the efforts feasible by the company to enable members to participate and to vote on the items being considered at this meeting. Before we take up items as per the notice, let me present to you the key highlights of the performance for the financial year 24. Dear shareholders, India stands out as a bright spot characterized by low geopolitical risks, relative political stability, and a robust and growing economy. However, the global environment remains uncertain, with geopolitical risks emerging as a significant challenge. Ongoing conflict from the Middle East to Ukraine, as well as the potential shifts in Western democracies, are contributing to a complex landscape for business worldwide. Although these global factors may indirectly impact InfoEdge, the company's primary focus remains on serving the Indian market. India's growth story over the past decade has been just remarkable, driven by resilience and vision. Despite challenges like the pandemic and global conflicts, the Indian economy has shown an impressive ability to rebound, primarily due to the strong domestic demand. In financial year 24, India recorded 7.3% real GDP growth, building on the 7.2% growth in FY23. Key sectors, including manufacturing and construction, saw strong performance with over 9% growth in the financial year 24, fueled by stable domestic demand and infrastructure development. Inflation has remained under control. The central bank's repo rate has stabilized, and the foreign exchange reserves are strong, laying the foundation for India's projected steady rise to the third largest economy globally. For InfoEdge, this economic growth bodes well as online platforms align with the expanding needs of India's economy in employment, education, real estate, and marriages. India's rapid digital transformation has further bolstered the opportunities. Internet penetration has surged from 14% in 2014 to over 55% by 2024, supported by mobile broadband expansion, digital literacy initiatives, and the rollout of affordable mobile devices and 5G. More than 50% of the new internet users are now from rural areas, signaling vast untapped potential in Tier 2 and Tier 3 cities. As India aspires to become a 40 trillion economy by 2047, Tier 2 and Tier 3 cities are playing a pivotal role in this growth. These cities, which house 45% of India's urban population and contribute 37% to GDP, are rapidly developing as economic hubs. Factors such as lower operational costs, improved infrastructure, and a rising middle class are attracting businesses to these regions. For InfoEdge, this means expanding the reach to cater to a broader and more diverse customer base across India. By the close of the financial year 24, InfoEdge has grown its presence to 83 branches across 67 cities, supported by a robust sales force of 3,387 personnel. In this rapidly evolving landscape, the focus remains on seizing emerging opportunities, driving growth across businesses and staying aligned with the needs of a transforming economy. The accelerating adoption of artificial intelligence globally presents significant potential, and we are proud that InfoEdge, particularly through the NAUKRI vertical, was an early mover in this space, having begun AI investments way back in 2011. Initially concentrated on parsing resume data, the company's AI efforts have since expanded across multiple applications, creating a competitive edge for us. With the continuous advancements in computing technologies, the company has significantly scaled its AI initiatives since 2021. The number of AI models we use has surged from about 60 to 70 in mid-21 to over 500 by mid-2024. This growth is matched by the expansion of the AI team, which has grown from 15 scientists in 2021 to more than 60 by early 2024, supported by a strong team of machine learning engineers. The company's AI lab is now amongst the most advanced corporate AI facilities in India, dedicated to developing cutting-edge in-house AI models for the key businesses, NAUKRI, 99 Acres, Jeevan Sathi, and Shiksha.
As we move forward, the commitment to leveraging AI will remain central to strategy, helping us deliver innovative solutions and maintain the competitive edge in a dynamic business environment. We would also like to highlight that AI technologies are still in their nascent stage and can, on the other hand, be very disruptive. The entire industry is actively exploring innovative ways in which AI can drive better business outcomes. However, while AI presents significant opportunities, it also carries risks, which we are carefully monitoring as we navigate this evolving landscape. While the macro environment points to steady growth for InfoEdge in the coming years, FY24 did present some challenges, particularly in the core recruitment segment. The global slowdown in IT hiring impacted billing and revenue. However, the focus on diversifying into non-IT sectors such as manufacturing, real estate, travel, healthcare, and BFSI have begun to pay off. The direct non-IT sector's contribution to recruitment revenue grew from 37.2% in FY23 to 41.8% in FY24. Despite the headwinds, we achieved 7.5% revenue growth in the recruitment segment while generating healthy cash. The NAUKRI database has reached a significant milestone of 100 million resumes, further strengthening the leadership position and amplifying the powerful networks within the platform. The company has also expanded the recruitment portfolio with more comprehensive product offerings and functionalities. This has enhanced user engagement and boosted productivity, leading to increased value-added services and higher revenue per customer. To align the brand with the evolving expectations of the new generation of users, the company introduced a fresh brand identity in March 2024. This rebranding, launched during IPL 2024, retains the legacy while adopting bolder aesthetics and has been well received. I believe some of you have seen this while you were waiting for this AGM to start. The recruitment vertical also saw strong contributions from niche and adjacent recruitment businesses in FY24. IIM Jobs, NAUKRI, Fast Forward, and NAUKRI Gulf showed solid growth, while the newer ventures Job Hai and Ambition Box have started generating revenue as of Q4 FY24. As a result, the recruitment business is undergoing a transformation, reaching a wider audience with increasingly focused value-added offerings. The Indian real estate sector has rebounded strongly over the past 2 years, and competition in the online real estate classifieds has intensified. Despite this, 99acres maintained its leadership in terms of traffic, time spent, and brand recall in FY24. We focused on growing this leadership cost-effectively, improving the efficiency of digital performance, and marketing through analytics, creative content development, and audience optimization strategies. This led to a 24% growth in billings, while operating losses were reduced by 42% to 688 million rupees, and cash losses decreased by 82% to 131 million rupees in FY24. Jeevansathi, the matrimonial platform, underwent a significant repositioning too in FY23 with the introduction of various free features. This boosted organic traffic and user profiles, but impacted revenues. FY24 marked a turning point as we successfully tapped into new revenue streams while maintaining user growth momentum. Focused on organic growth and reducing advertising spends, Jeevansathi achieved 17% growth in billings and 10% growth in revenues, while operating losses reduced by 44%. User engagement metrics also showed steady improvement, positioning the business on a path to becoming a self-sustaining one in the coming years. The education vertical, Shiksha, continued to grow steadily with billings up 15% and revenues increasing by 19% in FY24. The vertical generated operational profits of 28 million rupees. Domestic education services remained strong, while study abroad platform faced challenges due to external geopolitical factors. However, we remain confident in its long-term prospects and continue to invest in strengthening the offerings. Across the board, we are enhancing the content to be more comprehensive and student-friendly. Overall, InfoEdge's
standalone business maintained its growth trajectory despite challenges in FY24. Revenue from operations grew by 10.3% to 23,810 million rupees, while operating margins increased from 34.1% in FY23 to 36.6% in FY24. Operating profits rose by 18.4% to 8,712 million rupees, and cash generated from operations before taxes grew by 9.3% to 11,347 million rupees. These gains reflect the strategic implementation of diverse business models across the portfolios, coupled with stringent cost control measures that have enhanced margins and driven profit growth at a faster pace than revenue. Over the past 5 years, InfoEdge has demonstrated resilience and adaptability in the face of economic fluctuations. The diverse portfolio, strong market presence, and strategic investments have been key enablers of the success. During this period, we solidified the leadership in online recruitment, ventured into new verticals, and harnessed technology to enhance the services. Throughout this uncertain phase, InfoEdge's standalone businesses achieved a robust net revenue compounded annual growth rate, or CAGR, of 17%, climbing from 12,727 million rupees in FY20 to 23,810 million rupees in FY24. Operating profits grew at an impressive CAGR of 25.2%, rising from 3,547 million rupees in FY20 to 8,712 million rupees in FY24, showcasing the strong recovery we made following the revenue and profit declines experienced during FY21 due to the pandemic. The company's balance sheet remains solid, with a total size of 293,038 million rupees as of March 31st, 2024, of which 87% is composed of shareholder funds. We have implemented a well-structured investment strategy with 11% of the balance sheet in liquid assets and 85% allocated to a diversified portfolio of businesses and startups. The companies within investment portfolio either complement the core businesses or deliver independent financial returns over time. As of March 31st, 2024, we have 8 strategic investments with a total cost of rupees 5,132 million, all of which support InfoEdge's core operations. Additionally, we hold investments in 21 early-stage companies with a combined investment value of rupees 5,547 million rupees on the company's book. Over the years, 2 of the company's portfolio companies, which you're well aware of, Zomato and Policybazaar, have successfully gone public. By March 31st, 2024, the investment of rupees 7,223 million in these businesses had grown to a market value of a stupendous rupees 283,041 million rupees. The company's structured investments also include partnerships through alternate investment funds. In collaboration with the long-term partner Temasek, via its subsidiary McRitchie Investment Private Limited, we've launched 3 funds with a total commitment of approximately $450 million, where the contribution would be around half of the total fund size. These funds have already made several promising early-stage investments, reflecting the company's commitment to exploring new opportunities for growth and value creation. India's growth trajectory remains strong, presenting considerable opportunities for the businesses in the near term. However, the markets are dynamic, requiring the company to stay agile and responsive to maintain the growth momentum and face competition effectively. To expand the reach, we are venturing into new marketplaces across the country and offering value-added products that hold significant potential for business growth. The company's strategy emphasizes leveraging technology, including AI, while simultaneously building a larger on-ground sales force, essentially for engaging a broader segment of the market. The company's fundamentals remain robust.
The operational portfolio operates with an asset-light model with a substantial portion of revenues derived from advanced subscriptions. Sorry for the tripping over that word. We are now generating over rupees 11,000 million in cash from operations before taxes annually. The cash balance of INFOEDGE, including wholly owned subsidiaries, was rupees 41,907 million as of the 31st March 2024. The financial investment portfolio follows a structured approach supported by alternate investment funds and a strong global partner. Even as we focus on growth, we have consistently delivered profits and maintained regular dividend payouts since the company's listing. We remain deeply thankful to all the stakeholders, particularly the shareholders, for being the backbone of the business throughout the history. Today, we are a company in transition. With years of accumulated domain expertise across the businesses, we are well positioned to enter the next phase of growth. This stage is marked by rapidly changing customer preferences, swift technological evolution, and increased use of AI and data science. Historically, we've always aimed to stay ahead of external developments, and we remain steadfast in this commitment. We look forward to your continued support as we embark on the next wave of value creation. After those initial remarks, I'd like to sort of move to the business side of the AGM and the notice of the 29th AGM and the annual report containing the audited financial statements, including the consolidated financial statements for the year ended March 31st, 2024, and boards and auditors' report thereon have been sent by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the company or with our depositories. These documents have also been made available on the company website. Considering the above, the notice is being taken as read. I now request the company secretary to read the auditor's report and secretarial auditor's report. Sure, sir. The auditor's report on the standalone and consolidated financial statements and the secretarial audit report of the company for financial year ended March 31, 2024 do not contain any qualification, reservation, adverse remark, or disclaimer. The statutory auditor's report on the standalone and consolidated financial statements respectively are available on page numbers 230 and 306 of the annual report. The secretarial auditor's report is enclosed as Annexure 3 to the board's report on page number 170 of this year's annual report. Both the auditor's report are being taken as read. Now I further request the company secretary to provide general instructions regarding participating in the meeting. Sure, sir. We are pleased to bring to your notice that as required under Companies Act 2013, the company has provided you the facility to cast your vote electronically on all resolutions set forth in the notice. The remote e-voting period for this purpose had commenced on Saturday, August 24, 2024 at 9 a.m. and ended on Tuesday, August 27, 2024 at 5 p.m. During this period, shareholders of the company holding shares either in physical form or in the dematerialized form as on the cutoff date of Wednesday, August 21, 2024 were able to cast their votes electronically. Members who have not cast their vote electronically and are participating in this meeting will have an opportunity to cast their vote through e-voting system provided by NSDL. Members may please note that there will be no voting by show of hands. Now I would request the chairman of the company to take the proceedings further. Thanks, Chair. We now take up the resolutions as set forth in the notice. We will open the floor for any questions by members after all the resolutions are tabled. Item number 1 of the notice for your consideration relates to the adoption of the audited standalone and consolidated financial statements of the company for the financial year ended on March 31, 2024, together with the reports of the board of directors and auditors thereon. The resolution is being placed before the meeting to be passed as an ordinary resolution. Item number 2 of the notice for your consideration relates to the declaration of the final dividend of rupees 12 per equity share and confirmation of the interim dividend of rupees 10 per equity share already paid for the financial year 23-24. The resolution is placed before the meeting to be passed as an ordinary resolution. Item number 3 of the notice being about my reappointment as a director liable to retire by rotation
I'll have to recuse myself, and I request Mr. Sanjeev Bhikchandani, Executive Vice Chairman, to take up that matter. Thank you, Kapil. Item 3 for your consideration is to reappoint Mr. Kapil Kapoor, who retires by rotation and being eligible offers himself for reappointment. The text of the resolution has been provided in the notice of the AGM. The resolution is placed before the meeting to be passed as an ordinary resolution. I request the chairman to take up the remaining items of the notice. Thank you, Sanjeev. Item number 4 for your consideration is to appoint branch auditors and fix their remuneration. The text of the resolution has been provided in the notice of the AGM. The resolution is placed before the meeting to be passed as an ordinary resolution. And item number 5 for your consideration is to reappoint Mr. Chintan Thakkar as a whole-time director to be designated as whole-time director and chief financial officer of the company for another term of 5 years. The text of the resolution has been provided in the notice of the AGM. The resolution is placed before the meeting to be passed as an ordinary resolution. We now move on to our discussion with the members who have registered themselves as speakers with the company for raising their queries, or to share their views on any items of the notice of the AGM or on the financial statements of the company for the financial year 23-24. Before we commence the Q&A session, I request Jaya, Company Secretary, to share guidelines for the Q&A session. Thank you, sir. I'll quickly share a few guidelines for the Q&A session. We'll request the pre-registered shareholders to ask their questions one by one. Members are requested to unmute their microphone on their names being called before the speaking, and they may also enable their webcam if they wish to appear on the video. Members are requested to mention their name and location. Each shareholder will have 2 minutes for their queries in order to give opportunity to all other pre-registered shareholders. Once you have asked the questions, you can mute yourself and continue to watch the proceedings. Answer to the queries raised by the shareholders will be provided by management once all the speaker shareholders have spoken. Members may also note that the company reserves the right to limit the number of members asking questions depending on the availability of time, and those shareholders who are unable to speak due to connectivity issues would be allowed to speak once the other shareholders have been given the opportunity to speak. Those members who have not registered themselves as speakers can communicate and share their comments or queries, if any, through communication box appearing on the screen. Company would reply to all those queries within 15 days. Members are requested to also put their email ID along with the complete queries on the communication box. Thank you. Now I request Swapnil to invite the speaker shareholders. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we will now begin with the question and answer session. We have first question from Mr. Gagan Kumar. Mr. Kumar, please. Yes, we can hear you. Please go ahead. Yeah. Good evening, Mr. Chairman, Board of Directors and fellow shareholders. Myself, Gagan Kumar, I am joining this meeting from Delhi. First of all, I would like to mention that I had requested for a hard copy of balance sheet, which is received by me well on time. So I had studied the balance sheet, but there is no particular question pertaining to accounts, as it is in very understanding language and easy to understand language. So there is no question pertaining to accounts. Sir, I want to ask that our promoter holding is 37.88%. So can we expect any buyback from your side in the coming time? And what is our value creation roadmap for next 2 months? And when will there be dividend increase as company has cash balance? So, and my last question is that can we also expect a split? It is like a mini bonus for us, sir. As I am a long-term investor, I would want to say that behind this successful event, there is one man. I must say him the darling of shareholder, Mr. Kumar. He has very cordial relation with all the shareholder. Mr. Kapoor, I am with this company from a long time, and a long time back, I am associated with you in Timex Group also.
So thank you so much for this opportunity, and kudos to Mr. Kumar for bringing out such higher standard of corporate governance and investor-friendly approach to each and every shareholder. Thank you so much for this opportunity. Thank you very so much, Mr. Kumar. Yeah, Swapnil, you could ask the next shareholder to. Yes. We have our next speaker shareholder, Mr. Manjeet Singh. Mr. Singh, we have given you permission to unmute your microphone. Hello, Chairman sir, can you hear my voice? Yes, we can hear you. Please go ahead. Chairman sir, first of all, good evening to you, all the board of directors, all the staff of InfoEdge Limited and my co-fellow shareholder. चेयरमैन सर, जिस तरीके से आपने अपनी ओपनिंग रिमार्क्स में कंपनी के बारे में बताया, उससे सर क्लियर विजन होता है कि आने वाला जो हमारा एक फ्यूचर है वो सर एक ब्राइट फ्यूचर है। वो सर ऑलरेडी हमें सर हर ईयर टू ईयर में सर हम लोगों को दिखता भी है सर, जिस तरीके से हमारा शेयर प्राइस आप लोगों की मेहनत के साथ हमें रिटर्न दे रहा है। बाकी चेयरमैन सर, थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर, हाउ इज द कंपनी प्लानिंग टू डील विद द एआई इन डेज टू कम, एंड हाउ डज द कंपनी सीज एआई इम्पैक्टिंग द जॉब मार्केट, और सर इज देयर एनी रिस्क टू कंपनी बिकॉज ऑफ एआई? थोड़ा सर इस बारे में बताएं। बाकी चेयरमैन सर, जिस तरीके से आपके नेतृत्व के अंदर पूरे के पूरे सेक्टोरियल डिपार्टमेंट और मिस्टर कुमार जी, जिन्होंने सर एक एक शेयर होल्डर को सर अपनी फैमिली की तरह रखा है सर, जैसे कि इन्फोएज की एक फैमिली है, वैसे ही सर उसी तरीके से उन्होंने हर एक शेयर होल्डर को एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, और सर पोलाइटली एक एक चीज का भी बताते हैं, अगर हमें कोई दिक्कत आ जाए ज्वाइनिंग में या कोई भी दिक्कत आती है, सर ही विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग। बाकी चेयरमैन सर, जिस तरीके से आपका प्रकाश है इस कंपनी के अंदर, और सर हम लोगों को अच्छी से अच्छी रिटर्न देने की, एक एक एम्प्लॉय जो हमारी इन्फोएज का मेहनत कर रहा है सर, हर एक प्रमोटर को और हर एक इन्वेस्टर को अच्छी से अच्छी रिटर्न देने के लिए हम इन लोगों का सर धन्यवाद करना चाहेंगे। बाकी चेयरमैन सर, यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से टेक्सटाइल डिपार्टमेंट मेहनत कर रहा है, और सर जिस तरीके से अभी पिछले महीने सर एक एजीएम हुई, उसके अंदर सर काफी दिक्कत आई, क्योंकि गूगल का जो था सर वो सब सर्वर डाउन हो गया, तो सर उस दिन जितनी भी एजीएम थी वो सारी की सारी सर पोस्टपोन हो गई थी। सर यही कहना चाहूंगा सर, जिस तरीके से पूरी की पूरी सेक्टोरियल डिपार्टमेंट की ये मेहनत होती है सर कई टाइम की एक एजीएम को कराने के लिए, उन लोगों की सर जिस तरीके से वो लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं, और सर हर एक चीज को तैयार करके, और हर एक जैसे स्पीकर शेयर होल्डर को तारों के जरिए आपके सामने बुलवाना, ये सर कोई एक आसान काम नहीं होता। बाकी सर यही कहना चाहूंगा, हाइब्रिड अगर मीटिंग हो सके अगले साल तो सर एक हाइब्रिड एजीएम करिए। बाकी चेयरमैन सर, आपके निर्देश के अनुसार पूरे के पूरे सेक्टोरियल डिपार्टमेंट और मिस्टर कुमार जी, जो एक एक शेयर होल्डर को अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, इन लोगों का सर हम धन्यवाद करना चाहेंगे। और सर यही जरूर कहना चाहूंगा सर, इस एजीएम के बाद आप अपने पूरे के पूरे सेक्टोरियल डिपार्टमेंट और सर कुमार साहब को भी सर अपने पास बुलाइए, और सर एक एक की पीठ जरूर थपथपाइए कि सर वो इतनी आराम से शेयर होल्डर को आपके सामने बोलने का मौका देते हैं। थैंक यू चेयरमैन सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत सिंह जी। Thank you so much, Mr. Singh. Our next speaker shareholder, number 3, Mr. Yashpal Chopra, will ask his question. Mr. Chopra, please unmute your microphone and your camera. Muted and this camera. Yeah, am I audible now? Yes, Mr. Chopra, we can hear you. Myself Yashpal Chopra, calling from Delhi. Client ID and last figure 0454. Good to see you. Sir, I am a shareholder of the company. Since inception, I can call it that from that pre-IPO broker conference level, since then I am with the company. And I have seen the company growing from these rupees 250. It has now risen to 7,570. So I have seen the grand performance of the company. And that shows the investors' confidence in the management, company's policies and the company's products. So this is a great thing. Sir, as regards the performance of the company for the last year, I would say that it is excellent. There has been a excellent growth in revenue, PBT, PAT, EPS, ROC, and even the dividend has been investor friendly. And particularly, I'm surprised to read out that thing in this annual report that our PAT this year has been 5,945 million against versus 70.5 million loss last year. I do not understand what is the magic behind that there has been such a magnificent turnaround.
and this point I would definitely like to be glorified over there. Sir, as regards the verticals of our growth, that is excellent that you have given this profit sharing ratio, profit earning ratio in our company, and education in the Shiksha sector, that is a lead, having 27%, and 19 and Naukri sector 19%, and real estate 11%, and the rest other than all that. So this is a great thing, and you see that our company is having 86 branches, pan India presence, ranging from north from Jammu to south from Tirunelveli, and from east from Guwahati to west from Gandhidham. So this is a great thing as regards the future forecast. I think that you have just given a very clear picture, because that GDP growth in the coming time going to be excellent. There will be an excellent liquidity in the hands of the people. So definitely the future growth of our company is also going to be excellent. So, sir, I have got a few queries. The first query is that we are having a number of 5,750 employees. What is the gender ratio in female and male in that? This is one of the query. The second thing. Could you repeat that? What is the gender ratio? Gender ratio means between the male and female. That I would just like to find out between the strength of this 5,750 employees has been shown in your annual report. So I just want to find out how many are women and how many are men. So this is called gender ratio, sir. And the next is, and the next query is that you have just given 6,200 training sessions to the people. In spite of that, I just want to find out what is the attrition ratio in the company. And final question is, sir, even in past we have been requesting for bonus. Our general reserve position is many fold that our authorized capital, and we are just in a very comfortable position to issue bonus. So I will just appeal the management just to consider some liberal bonus for the people, for our shareholders who have been waiting for quite a long time. And then the last, is there any corporate action with the company, in the minds of company, for bringing out another Zomato policy bazaar, because their Zomato has been quite successful. So now we are awaiting some Zomato policy bazaar from your end. So this is these are my queries, and before I just close it, I would like to thank our company secretary, our CFO, and particularly to Mr. Kumar, as everybody is, because he is a person who is just keeping a close touch with almost all the investors. He is just asking that have you got received the link? Are you in position to join? Is there any problem? So this is a very good thing that he is having a very sound concern for the investors. So this is the best. This is a good thing. And finally, I will pray God for the positivity for the chairman to the last man in the organization, because that positivity means the strength of the company, and the strength of the company means that our share will just touch 5 figures in the coming time. So then this is what I hope and I feel. Thank you. Best of luck to you. Thank you very much, Mr. Chopra. Thank you so much. Our next speaker shareholder, number 4, Krishan Lal Chadda and Chetan Chadda. Mr. Chadda, we have sent a prompt on your screen. Please accept that. Can you hear me, sir? Please Yes, confirm that. Yes, we can hear you. कपिल जी क्या हालचाल है सर? आज शायद कोविड में ये 5वां साल है जब मैं एवरी ईयर स्पीकर के लिए हमेशा एक रिक्वेस्ट भेजता हूं, लेकिन मेरी जो रिक्वेस्ट है शायद थोड़ी लेट पहुंचती है और सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन वो ये है कि मकड़ी भी सर बार बार अपना जाल बुनने की कोशिश करती है, और कोशिश करते करते सर
हम भी कोशिश करते करते इस बार 5वें साल में जुड़ गए आपके साथ। ये इसके लिए मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का धन्यवाद करूंगा कि हम जब स्टार्टिंग से आईपीओ आया था तब से आपके जुड़े हुए हैं, और हर साल हमें आपकी एजीएम अटेंड करने का जो मौका मिलता था रूबरू। तो एक साल की इस साल आप इसको रिक्वेस्ट को हाइब्रिड मॉडल पे रखने की जो कोशिश करें, ताकि जो साल में एक बार आपसे मिलने का मौका है वो हम ना खोएं, और हर साल हमें आपकी एजीएम में जुड़ने का जो मौका है वो जरूर मिलता रहे। सर एक जो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इसमें चैट बॉक्स है वो उसको डिसेबल से एनेबल करवाया जाए, ताकि जो शेयर होल्डर स्पीकर के लिए नहीं जुड़ पाते हैं वो चैट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट को या अपने क्वेश्चन को जरूर डाल पाए। ये जरूर देखें। हमारे शेयर का प्राइस सर आज टुडे क्लोजिंग 7610 रुपये हो गया है। इसके लिए सर हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हम वाकई में एक अचीवमेंट कर पाए हैं। डिविडेंड सर हमारा 12 रुपये देखा जाए 120 पॉइंट आपके नजरिए से बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे नजरिए से ये दिल मांगे मोर है सर। तो कम से कम इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा देखें जरूर। सर एक रिक्वेस्ट ये है कि बाय बैक से पहले जो बोनस है सर वो काफी समय से नहीं मिला है, और इस टाइम हमारी एनुअल रिपोर्ट जो है कैश फ्लो में बहुत हेल्दी है। तो बोनस के बारे में बोर्ड अब कंसीडर जरूर करें। अगर आप बोर्ड जो है बोनस नहीं भी सोच रहे तो सर कम से कम हम 4 डिग्निटीज के अंदर है, एजुकेशन के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, मैच मेकिंग और रिक्रूटमेंट के अंदर। तो अगर उसकी हम अलग अलग कंपनी बनाएं और चारों के शेयर होल्डर को डिविडेंड एक शेयर सिंगल सिंगल दे दे, तो शेयर होल्डर को भी सर अपनी इक्विटी जो है मल्टीपल करके, और हर कंपनी के डिपार्टमेंट का फोकस भी अपने अपने काम को करने में हो जाएगा, और हमारी कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी सर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि सर हम एजुकेशन के अंदर 27% रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, रियल एस्टेट से 11%। लेकिन सर मैच मेकिंग में देखा जाए तो इस साल हमने सिर्फ 0.2% ही ग्रोथ करी है, जो सर मेरे हिसाब से थोड़ी कम है, शायद उस पर हम फोकस नहीं कर पाए। और रिक्रूटमेंट में भी सर हमने 18% की रेवेन्यू जनरेट किया है अपनी उसके अंदर। लेकिन सर रेवेन्यू हमारा 23,810 मिलियन रहा, ये बहुत पिछले साल से काफी बढ़िया रहा है। लेकिन सर हमने मार्जिन जो प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर से थोड़े कम किए हैं, इसका क्या रीजन रहा, इसके पीछे थोड़ा जरूर बताएं। क्या हम कॉम्पिटिटर हमारे मार्केट में और बढ़ गए हैं, इसके बारे में देखें। जहां तक सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का सवाल है, उनको हम मेल भेजते हैं उसका रिप्लाई आ जाता है, इसके लिए उनका धन्यवाद है। लेकिन अपने साथ जुड़े रखने के लिए हमें हर साल अपने साथ इसी तरीके से जोड़े रखें। और सर बोनस जरूर सोचें, या अपनी कंपनी जो है जिस जिस इसमें हम काम कर रहे हैं उस तरीके से हमें किस तरीके से उनके शेयर मिल सके, ताकि क्योंकि अभी तो कंपनी के पास सारी की सारी 100% इक्विटी है, तो उसमें हमें भी भागीदार बनाएंगे तो साल में हमें 4 बार आपसे मिलने का मौका मिल पाएगा अलग अलग सेगमेंट के अंदर। तो आप भी, कंपनी भी ग्रोथ करेगी और हम भी ग्रोथ करेंगे। ये बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी होगी कंपनी को। रेवेन्यू आज की डेट में सर मार्केट 80,000 क्रॉस है, तो एनकैश करने का मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया टाइम है, क्योंकि इन्वेस्टर बहुत बढ़िया आ रहा है। जो सर पहले स्मॉल इन्वेस्टर को कंपनी के अंदर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, आज हर स्मॉल इन्वेस्टर ही कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहा है। तो इसको थोड़ा आप जरूर देखें, ध्यान करें। बाकी आप हमसे ज्यादा थोड़े समझदार हैं और जानते हैं। बाकी मैं सभी का नाम कह लूँ, सेक्रेटरी एंटायर डिपार्टमेंट धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे आपके साथ जुड़ने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बाकी हमारे कुमार साहब हैं, मैं तो कहूंगा कि आप उन्हें, हमारे साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं, कोई डायरेक्टर की डिग्निटी दीजिए ताकि वो भी हमारे साथ आपके साथ देखने का हम उन्हें मौका ले सकें। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you very much, Mr. Chadha. Thank you. Our next speaker shareholder number 5, Mr. Satish Shah, has not joined the meeting. Hence, we will move to our next speaker shareholder number 6, Mr. Ankur Chanda. Mr. Ankur, we have given you permission to unmute your microphone. I am audible? Yes, we can hear you. Okay. Good afternoon to everyone. Sir, I just want to say that our corporate governance is too good. तो सर इसलिए वैसे तो दिक्कत है नहीं। बाकी मैं ये देख रहा था सर, हमारे जो 2021-22 के रिजल्ट हैं वो बहुत बढ़िया आए थे। तो सर वैसे रिजल्ट तो अब भी ठीक है, लेकिन हम वो कहते हैं ना सर, दिल मांगे मोर, तो हम तो यही चाहते हैं कि उसी तरह के रिजल्ट हर साल आए। तो आप और थोड़ा सा ऐसा कोशिश कीजिए कि वैसे ही रिजल्ट हर साल आए। और बाकी ये है कि मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन फिर भी है आपसे कि डज कंपनी प्लान टू सेल इन्वेस्टमेंट इन जोमेटो एंड पॉलिसी बाजार? तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बाकी हमारा सीएस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कुमार साहब तो जब सारे ही कह रहे हैं सर, मैं कैसे पीछे हट जाऊं।
तो वो सबको जोड़ के चलते हैं सर, सबके साथ मिलके और सबको जोड़ के चलते हैं, तो उनकी तो वाकई में तारीफ करनी बनती है सर। सर इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Thank you very much, Mr. Chanda. Thank you. Our next speaker shareholder number 7, Pradeep Sood, will ask the question. Mr. Sood, we have given you permission to unmute your microphone. Can you hear me, sir? Yes, Mr. Sood. नमस्कार चेयरमैन सर, मैं प्रदीप सूद दिल्ली से अपने साथी भाई अजय खुराना जी के साथ आपका और पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। चेयरमैन सर, बीते सालों से आप जिस मेहनत लगन ईमानदारी से कंपनी के लिए डिवोशन और डेडिकेशन से काम करते चले आ रहे हैं और इस कंपनी के शेयर्स को नई ऊंचाइयां दी हैं, बेहतरीन डिविडेंड दिया है और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट लाकर दिखाए, और हम ये उम्मीद करते हैं और आशा जताते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि आगे आने वाले समय में भी इसी तरह से काम करते हुए आप इस कंपनी के शेयर्स को और नई ऊंचाइयां देंगे, इससे भी बेहतरीन डिविडेंड देंगे और इससे भी बेहतरीन रिजल्ट लाकर दिखाएंगे। चेयरमैन साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या फ्यूचर में हमारी कंपनी का शेयर बायबैक में कोई प्लान है या नहीं? दूसरा चेयरमैन सर, मैं कुमार साहब की जितनी तारीफ करूं कम है। वो शख्सियत हैं, इतने सालों से जब ये मीटिंग फिजिकल मोड में हुआ करती थी तब से वो हम लोगों का इतना ख्याल, मतलब कि A to Z छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों की पूरी डिटेल, कंपनी कितनी प्रोग्रेस में, कोई भी सवाल किसी वक्त भी आप उनके फोन पे पूछ सकते हैं और वो हर वक्त हाजिर जवाब रहते हैं। अब बताइए, जब ऐसे ऐसे लोग इस कंपनी के साथ हैं तो वो कंपनी कितनी रेपुटेशन बना के रखती है, चेयरमैन सर आप ये अच्छी तरह जान सकते हैं। कुमार साहब का मैं तहे दिल से आभारी हूं कि इस प्लेटफॉर्म तक लाने में उन्होंने हमारी जितनी मदद करी वो वाकई में तारीफ काबिल है। चेयरमैन सर, आप इसी तरह तरक्की करते रहिए, हम सारे शेयर होल्डर आपके साथ हैं। और ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा चेयरमैन सर, अगर ये बायबैक का कोई प्लान है तो हमें बड़ी एक्साइटमेंट भी होगी और सुनने में मजा भी आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं फिर से चेयरमैन सर आपका और कुमार साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं। जब ऐसे ऐसे लोग इस कंपनी में हैं तो हमारी कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी करने में कोई कसर छोड़ ही नहीं सकती। थैंक यू। और हम जब नेक्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पे मिलें चेयरमैन सर, तो कुमार साहब के एक नए ओहदे के साथ, एक नई पोजीशन के साथ। और चेयरमैन साहब, लास्ट बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो हमारा वीसी प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। देखिए, आपके कई डायरेक्टर किसी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, वो एक क्लिक से ये मीटिंग ऑन करके, एक क्लिक ऑन करने से ये मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। और ऐसे बहुत से, हमारी कंपनी आज की डेट में ग्लोबल कंपनी है और दुनिया के हर कोने में हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बैठे हैं। ये जो मोड है वीसी मोड है, ये बहुत ही बेहतरीन मोड है। आप इसी मोड को कंटिन्यू रखिए इन फ्यूचर में, ताकि पूरी दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी शेयर होल्डर हमारी मीटिंग से रूबरू जुड़ सके और आपसे रूबरू बात कर सके। यही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय होगा। थैंक यू चेयरमैन सर, थैंक यू very much, Mr. Sood. Thank you. Our next speaker shareholder number 8, Praveen Kumar, will ask a question. Hello, I am audible, sir. Yes, Mr. Kumar, please go ahead. A very, very good morning to my respected chairperson, esteemed board of director, my fellow shareholder, myself, Praveen Kumar, joining this meeting from New Delhi. I have few observations which I love to share with the house. But before that, in this financial year, this is our first interaction with the management. So I wish the entire management team, each and every dedicated employee, a happy, healthy, and prosperous future. Coming down to my observation, sir, I'm with the company since IPO, and I'm very, very delighted. I waited for this day, Kapoor Saab, to listen to you. The address you given to the shareholder, I think it is one of the best in the industry. Very, very detailed analysis. You work very hard on it, so I'm very, very thankful for that. It is very, very informative for a retail investor like me. Under your leadership, our company grew leap and bound, shown results, our hard-earned money into the safe hand. We will get multi-bagger
in our portfolio. I mean, that's truly wonderful, sir. The entire credit goes to your leadership along with the professional team, sir. Sir, I wholeheartedly support all the resolution which you set out for the notice today. And I'm very, very thankful that we have a company secretary, Jaya, along with her entire team for bringing out higher standard of corporate governance to the retail investor. It was always a red carpet welcome. If with our queries throughout the year, this is the company who care for us, listen to us. I mean, that's truly boost our morale as far as our investment is concerned in the company, sir. I'm very, very thankful. She is the biggest asset we have, sir. And coming down to my question, if possible, can we split our share so that the liquidity will increase in the counter and it will be very, very reachable to other retail investors also who like to participate in the growth story? This is my only question. And at the end, I wish you all the luck and all the best. You are doing fantabulous job. Jai Hind, sir. Thank you very much, Mr. Kumar. Thank you. Our next speaker, shareholder number 9, Mr. Santosh Bhutani, will ask the question. We've given you permission, Mr. Bhutani. Please go ahead and speak. Thank you for the opportunity. Santosh Bhutani and MP Bhutani. Client ID last three digit is 109 and 4882. A warm welcome to the all board member and management team. Regarding annual report, I would like to thank the team for very informative annual report and accurate compliances made. All section has been covered in a transparent and lucid manner. I am extremely confident that the leadership team will hit more significant milestone and to take the company to the next phase of growth. Sir, therefore, do what is right, not what is easy, and take your step is a blessing. Sir, my question is, what are some of the challenges and opportunity that you foresee in the coming time? And sir, is there any acquisition plan of the company having sufficient rich cash balance in near future? Sir, what is the role of AI, artificial intelligence, because it is like a highway and its transport are professional and organizations, and is this platform playing better role to achieve the target in our company? Sir, regarding CSR, what is your contribution in road safety, skill development, and water conservations? And is there any plan of our company to sponsor any game in coming time? Sir, I would appreciate if you could briefly reply, and I wish the company all the best for the future and hope to see a healthy growth in business and size of the company. कहते हैं कपूर साहब, कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है, और ये जान आपकी लीडरशिप में हमने शुरू से, जब से आप इस बोर्ड में आए हैं, आपको देख रहे हैं. हमने टाइमिंग्स में भी आपको देखा था और इसमें भी आपको देखा है, क्योंकि आप पंखों से नहीं, बुलंद इरादों से, बुलंद हौसलों से उड़ान भरते हैं. और ये उड़ान 3 साल में कंपनी को कहां से कहां ले गई है, ये देखकर हम सब हर्षित हैं, खुश हैं. और इन्वेस्टर, ऑल इन्वेस्टर किसी भी कोने में इंडिया के में हैं, वो अपने आप को प्राउड फील करता है. देयरफॉर आई फील प्राउड टू बी ए मेंबर ऑफ INFOEDGE शेयर होल्डर फैमिली. सर, मंजिलें मिलेंगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. आपकी कंपनी ने उनको भी एक मंजिल दिखाई, उनको भी एक राह दिखाई जो भटक गए थे, जो घर में ही बैठे रह गए थे कोरोना में. आपने बड़ा कुछ अपनी जो विजन से अपनी कंपनी के, जो आपके चाहे naukri.com है, चाहे 99 एकड़ है, उसमें आपने बहुत अच्छा सा
एक जो है पेश किया हुआ है, एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा दिया हुआ है, और ऑल इन्वेस्टर और पब्लिक बहुत इस चीज का प्रभावित है। और मैं समझता हूं आपकी रहनुमाई में कंपनी बहुत तरक्की करेगी। और चूंकि आप अच्छे हैं, और मैं देख रहा हूं, चाहे वो कैटेगरी टीम है, चाहे वो HR टीम है, चाहे हमारे कुमार साहब तो नगीना है सर आपके यहाँ। मैं देख रहा हूं वाकई में सच में वो एक इंसान, एक नेक नीयत का इंसान, बेहतरीन सोच का इंसान, बेहतरीन व्यक्तित्व का इंसान जब वो हैं, तो आप तो सर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। और किसी ने बोला कि आप थोड़े से समझदार हैं, एक वक्ता ने बोला, मैं तो कहता हूँ सर आप थोड़े कहाँ हैं, आप तो पूरे 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 बहुत इतने परिपक्व हैं कि कंपनी को आप नई उड़ान, नई ऊंचाई दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय आपका, आपकी टीम का, और कैटेगरी टीम का, और सभी का, और कुमार साहब का, आप बढ़ते रहें। मे गॉड फुलफिल ऑल योर विशेस एंड कीप यू ऑल हैप्पी, हेल्थी एंड सेफ। थैंक यू टू ऑल। Thank you very much, Mr. Bhutani. Thank you. Our next speaker shareholder number 10, Charanjit Kordang, will ask the question. We have given you permission to unmute your microphone. Please unmute your microphone and you can go ahead with your question. Yes. Yes, we can hear you. Respected Chairman, listening to you gave me immense assurance on our good working. Lot of questions have already been asked. Sorry, Mr. Kaur. Sorry to interrupt. There is some disturbance at your end. Which has covered. Yeah, I'm muting. So that is why. Okay, now can you go ahead, please? Yeah, please. Can you repeat the question? You couldn't hear the question. So, Sorry, Mr. Kaur, your network connection seems to be unstable. Listening to you, lot of questions have already. Sorry, Chairman, sir, it seems the connection is unstable. Ms. Dang, I think we're not being able to hear your question. Could you mail that to us later? We're not being, the signal is coming in and out. Could we please move on to the next speaker shareholder for the moment? Sure, Chairman, sir. Our next speaker shareholder, Vimal Jain, will ask the question. Hello. Please, yes, we can hear you. Hello. Am I audible, sir? Yes, we can hear you. Thank you, sir. Thank you. Good evening, respected Chairman, sir, Board of Directors, and the shareholders joining this meeting through this portal. I'm joining this meeting from Delhi. First of all, I would like to congratulate the Chairman, sir, management, and all the dedicated staff for providing the excellent results in the year under review, wherein our profit after tax has been doubled. So my question is that, so in this scenario, how would you reward the shareholders in financial year 25? Shall we expect a split of the shares as it is trading at its all-time high in this year, or a mega interim dividend? Thank you very much to follow the good corporate governance and the company secretary, Madam, for providing a hard copy to me on a single request. And I would also like to convey my special thanks to Mr. Kumarji. I think he may be investor-friendly officer who helped me to get my pending dividend back to me. Even he gave me his personal number and told me that if I feel any type of problem to get back my old dividend, to talk him. And I got my pending dividend last year. Thank you to the Mr. Kumar sir and all the team of the corporate department, and all the best, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Jain. Thank you.
Our next speaker shareholder number 12, Indu Joshi, will ask the question. I'm audible, sir. Yes, we can hear you. Good evening, sir. Myself, Indu Joshi from Bhadurgarh, Haryana. Respected Chairman, sir, Board Member, and Secretary Department. I would like to thank all of you. It is my pleasure that I got chance as a speaker. Our company is very good, growing company. I am very, I am very proud of InfoEdge shareholder. I would like to ask a question that we used to see that many company focus on education in CSR activity, but nobody in focusing on health. So my question is that are you going to open dispensary, clinic, etc. in CSR activity? Thank you, Kumarji. Thank you, sir. Thank you, Ms. Joshi. Thank you very much, Ms. Joshi. Our next speaker shareholder, Shashi Jain, will ask the question. We have given you permission to unmute your microphone. Okay. Hello. Yes, we can hear you. Good evening, respected Chairman, sir, Board of Directors, and my co-fellow shareholders joining the AGM on VC portal. I, Shashi Jain, joined the AGM from Delhi. I am the shareholder since IPO. First of all, I thanks to our Chairman, sir, and Board of Directors for give us a grand performance during the year. I impressed with the performance, and I hope future of our company is bright. The Chairman sir's speech is very, very informative. Most of my queries cover under the Chairman sir's speech. Sir, my question is company's plan to exit or monetize the investment more. I support all the resolutions, and I also thanks to our company secretary and Kumar sir and entire team of secretariat department to help me to join the AGM on VC portal. And they providing me the hard copy of annual report at my single request. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Our next speaker shareholder number 14, Sardar Jasmeet Singh, will ask the question. Jasmeet Singh, we have sent a prompt on your screen. Please accept that. You can unmute your microphone and camera. Am I audible? Yes, we can hear you. Thank you. Respected Shri Kapil Kapoor ji, Chairman sir, Sanjeev Bhikchandani ji, ED Hitesh Obrai ji, all independent directors and shareholders. I am Jasmeet Singh from Delhi. Very good evening to all of you and Sat Sri Akal. Sir, much have been talked about. You have given a detailed, beautiful presentation. The excellent results speaks on their own, and there is not much which I can actually say now, since most of my queries have already been addressed. I have a couple of questions and observations which I may like to share with you. The first thing being that being a long-time shareholder, and in last couple of years, our subsidiaries have been listed, PB Bazaar and Zomato, and we were not able to get the true intrinsic value out of it. The way I understand that when we give a birth to a baby or a subsidiary, the shareholders who are part at that time should be given shares of that company. Now my humble request is, अभी आप हमारी जो जितनी सब्सिडरीज हैं उनके आप हमारे को शेयर्स अलॉट कर दीजिए इक्वल अमाउंट के जो हमारे पास इन्फो एज के हैं, ताकि जब भी ये कंपनी जब लिस्ट होंगी तो हमारे को जो है ना उनका रिवॉर्ड जो है वो अपने आप उस तरह से हमारे को मिल जाएगा. ये कोई किसी तरह से भी किसी भी जो एमसीए के जो डायरेक्टिव्स हैं उनका कोई उल्लंघन नहीं है. बहुत सारी कंपनियों ने जो है वो अपने अपने जो है ना सब्सिडरीज के शेयर आजकल देने शुरू कर दिए एज ए रिवॉर्ड. आपसे हम कोई बोनस नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा शेयर भी एमआरएफ की तरह बढ़े. आप इसकी इक्विटी मत बढ़ाइए, आप जो है ना इसको भी लाख रुपया कभी पहुंचाइएगा हमारी मतलब जो है ना आने वाली समय में.
लेकिन जो सब्सिडरीज को जो है उनकी उसमें से हमारे को जो है लाभ हो, इसके प्रति आप जो है कुछ हमारे लिए जो है ना सोचें। इसमें हमारी कंपनी की वैल्यूएशन ही बढ़ेंगी और आप प्रमोटर्स के पास सबसे ज्यादा जो शेयर्स है तो प्रमोटर्स को भी इसमें सबसे ज्यादा लाभ होगा। तो ये एक तो मेरी ये एक आपसे अपील है, ऑब्जर्वेशन है, जिसके ऊपर आप अपनी जो है ना राय दीजिएगा। दूसरा सर देखिए ऐसा है कि हम बहुत सारा काम हम कर रहे हैं। पीछे जो है हमने पिछले 2 साल पहले हमारे को करीब 9,000 रुपए का जो है शुद्ध मुनाफा हुआ था, 9,000 करोड़ का। वो पैसा जो है वो हमने किस तरह से वो उसका जो वो हम इस्तेमाल हमने किया या कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कंपनी के प्लान्स क्या हैं कि और जो हमारी और इन्वेस्टमेंट्स कहीं पर हमने की हुई हैं उनको जो है वो आगे हम कैसे और ग्रो करें, या उनमें से एग्जिट करके कहीं और जो है कुछ इनऑर्गेनिक अगर हमारे को पॉकेट्स नजर आती हैं तो वहां पे इन्वेस्ट करें। कुछ इसके बारे में बताएं। ये तो सर ऐसा है कि ये जैसे बीकानेर और हल्दीराम दोनों ही मिठाई बनाते हैं, लेकिन हल्दीराम की जो मिठाई है वो जिस तरह से मिठास उसमें जो नजर आती है वो बीकानेर में नहीं आती। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो हमारी जो इन्फो एज है वो हल्दीराम की तरह ही जो है ना वो मिठास जो है वो शेयर होल्डरों को दे। बस इतनी आपसे जो अपील है, दरख्वास्त है। बाकी मैं कुमार साहब की सब तारीफ कर रहे हैं, मैं मेरा मेरा एक डिफरेंट एंगल है कि हमारे मतलब इंडिया में और खासकर दिल्ली में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर कुमार साहब जैसे इन्वेस्टर मैनेजर्स की जरूरत है। तो क्योंकि हमारी कंपनी जो है इस स्पेस में है तो उनको मैं जो है ना उनको भी आप ये कुमार साहब जैसे जो है ना इन्वेस्टर मैनेजर आप प्रोवाइड करें, जिससे सारे जो है ना वो जैसे सबका साथ सबका विकास वाली सिचुएशन उत्पन्न होगी। इन्हीं आपकी स्माइल देख के मुझे बहुत आनंद आ रहा है जी। आप इस बात की अनुभूति में आपकी खुशी की अनुभूति मेरे को भी हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे पूर्ण विराम लगाता हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Number 15, Speaker Shareholder Subhash Chandar Wadhwa will ask the question. Mr. Wadhwa, we have given you permission. Hello. Yes, we can hear you. Respected Chairman and Board of Directors, good evening. My name is Subhash Wadhwa and I have joined from New Delhi. I first of all congratulate Chairman Sir and entire management of InfoEdge for doing exceedingly well during financial year 23-24. Our secretarial department under the leadership of Jaya Ma'am is very proactive and I am happy that we get response from them quickly, especially Kumar Saab. Thanks for confirming my name as Speaker. I support all the resolution of the company. I want to know from Chairman Sir how the company is planning to grow its business in the coming 3-4 years time. I also want to know from Chairman Sir whether the company is planning for a bonus issue, the same farmaish. Thank you, sir. Thank you so much, Mr. Chandar. Our next speaker shareholder number 16, Kanika Jain, will ask the question. Ms. Jain, we have given you permission to unmute. Hello, am I audible? Yes, we can hear you. Okay, thank you. Good evening to our chairman, sir, board of directors, and all the shareholders present in the meeting. Sir, first of all, I would like to congratulate the whole management and staff and all the shareholders as well, as our company is doing great under your leadership and also the hard work of our staff. Sir, I support all the resolutions, and as because of this shortage of time, as it has already been over 1 hour to the meeting, so I just almost all my questions are covered, but I still have one query. It is in regard to the artificial intelligence. We all know that artificial intelligence is already seeping into every part of our lives. So in this scenario, how is our company planning to use AI for its benefit? And at last, I just want to convey my thanks to the secretarial department for keeping the meeting on the VC mode. And I hope that you will continue to hold the meeting through VC in future also, which enables the shareholders like me to join from faraway places. I would also like to convey my thanks to Mr. Kumar and his whole team for
staying in touch with me for a smooth joining of this meeting, and also the moderator and the technical staff for conducting this meeting without any issues and interruptions. Thank you, sir. Thank you very much, Ms. Jain. Thank you so much, Ms. Jain. Our next speaker shareholder number 17, Gautam Nandi, will ask the question. Am I audible? Yes, we can hear you. Please go Thank ahead. you. Good evening and namaskar. Namaskar. Respected chairman, board of directors, my online fellow shareholders. Myself Gautam Nandi from Kolkata, very old equity shareholder of your company since your IPO issue. Kumar Sahab, namaskar, sir. How are you, sir? Sir, firstly, I'd like to give thanks to your secretarial department for sending me annual report along with notice and necessary joining link through email well in advance. And I also received the hard copy of your annual report as I requested in advance. So specially thanks to our respected company secretary and her whole team for rendering very good services to our minority shareholders. Sir, you are organizing your annual general meeting through video conference, and I find it's a grand success like the previous years. Sir, I'm very pleased to receive your wonderful annual report, which is very, very informative. Sir, you have provided in details regarding your accounts and performance of your company in your annual report. Sir, I find excellent performance in every segment, even in this challenging year. We also receiving the very good dividend you are paying to our minority shareholders. I am very happy, sir. Sir, what is the roadmap of our company for the next 3 to 4 years, especially related to the growth of our company? Sir, how many employees do you have at present, both permanent and non-permanent? Sir, what is the direct and indirect impact on our company after the implementation of Union Budget 2024-25? Sir, henceforth, please continue this VC meeting as we may able to join from anywhere, sir. Please keep in mind, sir. Sir, your CSR is excellent, so please keep it up. Sir, have you adopted the latest AI technology in your company for further modernization? So please answer, sir. Sir, the face value of your stock is rupees 10 at this moment. Now I'd like to know, is there any plan to split up your stock from rupees 10 into rupees 5 or rupees 2 or rupee 1 in near future? Sir, one request. Please do something, at least for our speaker shareholders. Sir, this is nothing but a token of love from your side, sir. Sir, please consider, sir. Sir, may we expect bonus share in this year? Please answer. Sir, your share price is rupees 7,640 now, which is all-time high. Sir, I am very pleased to say I got huge price appreciation in your stock, I must say, sir. Obviously, I am very happy, sir. I am very happy, Kumar साहब, आपका leadership में मैं बहुत खुश हूँ. Also, I am very proud to be a shareholder of your company. I have full trust with our strong management, sir, like you, and so along with my family, wholeheartedly support your all resolutions, which we have already casted through our e-voting. Sir, looking forward with a positive outlook towards our company with higher profit margin, handsome dividend, 1:1 bonus and return. May God bless you, sir. Stay safe, stay healthy. Namaskar, sir. Thank you very much for signing off, Gautam Nandi. Thank you. Thank you very much, Mr. Nandi. Thank you so much. Our next speaker shareholder number 18, Narinder Singh Chauhan, will ask the question. Hello. Yes, Mr. Chauhan, please go ahead. मेरी आवाज आ रही है, sir? Yes, we can hear you. Good evening, Chairman साहब, Board of Director, fellow shareholder. सर, मैं सबसे पहले तो सेक्टर डिपार्टमेंट और मॉडिटर का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस पोर्टल पर बोलने का मौका दिया. सर, मैं आज के सभी प्रस्तावित रेजुलेशन का समर्थन करता हूं. और सर, अगर बोनस के बारे में कुछ विचार किया जाए तो मेरा एक क्वेश्चन है. बाकी सर, आप अभी तक चेयरमैन साहब की स्पीच में और सभी शेयर होल्डरों द्वारा सर मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं. सर, मैं कुमार साहब का भी
एक बार बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जो हमारी किसी भी तरह की कोई ग्रेवेंसेस होती है तो हमें तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाता है, और सेक्टर डिपार्टमेंट से भी सर हमें तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाता है। सर जब लास्ट ईयर हमारी एजीएम हुई थी तो उस टाइम हमारा शेयर प्राइस लगभग 4000 के आसपास था। आज सर 7600 पार कर चुका है। जिस मेहनत लगन ईमानदारी से आप कंपनी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो सर, उसका सीधा रिजल्ट शेयर होल्डरों को मिलता है। तो सर मैं इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सर। कुमार साहब का एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू सर। Thank you very much, Mr. Chauhan. Thank you. Dear shareholders, due to time constraints, this would be the last question. For shareholders who did not get an opportunity to ask their questions, would request you to put their questions on communication box or send their queries on email ID investors@naukri.com. The company will respond to the same within 15 days. Chairman sir, we have the last question coming in from Mr. Ratan Kumar Jain. Mr. Jain, please unmute your microphone and you can go ahead with your question. नमस्कार सर, मैं रतन जैन दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। सर सारे पॉइंट जो है मेरे लगभग कवर हो चुके हैं जी, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा जी। कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है जी, सेक्टरियल डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी, और कुमार साहब तो सबने बता ही दिया कि बढ़िया काम कर रहे हैं जी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सर कि जैसे हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उसमें आगे बढ़ रहा है, उसी तरह हमारी कंपनी आपकी लीडरशिप में आगे बढ़ रही है जी, और आगे बढ़ती रहेगी आगे भी, ऐसी हमारी उम्मीद है जी। और हमें जो है बाकी बोनस का, स्प्लिट का, डिविडेंड का, ये सब पॉइंट आगे पहले जो है मेरे शेयर होल्डर वो जो है कवर कर चुके हैं जी, तो आप इन पे जो है ध्यान दें, तो जो भी संभव हो सके उतना करें जी। और कुमार साहब वो तो बहुत ध्यान रखते हैं सबका, वो सब शेयर होल्डर ने बता दिया जी, वो हम भी कह रहे हैं जी कि भाई बहुत ध्यान रखते हैं सबका, अपने परिवार की तरह समझते हैं जी। सेक्टरियल डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया काम करता है जी, क्वारी का हर क्वारी का जवाब देता है जी, कोई मतलब जो है वो नहीं छोड़ता जी। तो इसलिए जो है जी आप जो है जैसे भी समझें स्प्लिट करें, बोनस दें, उसको जो है उसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। Thank you very much, Mr. Jain. And thank you all the speaker shareholders for all your comments and your questions. I found a few general themes that came through, and I will try and address them together so that I don't end up repeating myself so often. Firstly, sincere thank you for all the positive comments you made about our management team, the secretarial team, and especially Mr. Kumar. We are really indeed very blessed to have such a committed and professional team, and thank you for your comments and recognizing that. As regards the questions you asked, there were several questions relating to bonus and split. And I'd like to assure you that we constantly and we continuously discuss that, evaluate, and see what is the right time to be considering those the bonus and the split. What is the real advantage of that? And as and when we will take those onto account, and we'll come back to you with details at the appropriate stage when we've been able to take a decision on moving forward on any of those issues. In terms of increasing dividends, and we have been continuously increasing dividends, but we also, as a board, as a management team, we have very energetic discussions on capital allocation all the time, and the whole goal is to maximize shareholder value. So in terms of trying to understand how much we give as dividends versus the opportunities we see, as many of you have mentioned, opportunities for acquisition, opportunities for startup investments, strategic investments. We see a lot of opportunities are there, and we're constantly trying to evaluate how do we optimize and maximize shareholder value. And we are very focused as a board on that function. So I assure you, we'll do our best while constantly sort of increasing dividends, as you've seen. Many of you, in many different ways, have asked what is the future roadmap for value creation of the company, and where are we planning to invest? What is the future roadmap for that? And I did cover a lot of these points in my opening remarks, but I'll reiterate some of the key themes out here.
We will be developing, nurturing adjacent businesses along with our core businesses. So we are going to be expanding our basket of products and services, increasing the opportunity size, providing a wide array of services to our customers, and trying to gain a higher share of wallet in that process. Our investments in businesses such as IIM Jobs, HighRisk, NAUKRI Gulf, Ambition Box, Job Hai have also developed very positive results. And, we continue to sort of develop and nurture those businesses. We are constantly evaluating all startup opportunities. And as many of you said, when is the next Zomato and Policy Bazaar going to come through? We are constantly on the lookout for such opportunities and trying to identify businesses that could, over a certain amount of gestation period and support from the teams, be able to unlock a lot more value. Investment in technology is something that we're doing. We are a tech company end of the day, and we are trying to invest more and more in technology. Many of you brought up comments about artificial intelligence, and I covered a lot of those in my opening remarks. We have been one of those companies early off the block for the last 10 years or so, even longer, that have sort of looked at this space and investing in artificial intelligence. We've increased the number of scientists we have on board. We've increased the number of applications that we can have for artificial intelligence. And we constantly are investing in this area to improve user recommendations, enhance operational efficiencies, and offer superior services that artificial intelligence can provide. But as some of you have also said, this is a very nascent area for us. It's while there are opportunities, there are also risks, because artificial intelligence is coming in a way that many of us and no one in the world is being able to evaluate what kind of disruption that might create. And we're trying to understand that. We're trying to stay at the forefront. We go to conferences. We're trying to hear what is happening in all parts of the world and being able to grapple with both the opportunities and manage the risks related to artificial intelligence. In terms of future investments, also, deeper market penetration. We're expanding our businesses more and more as we see opportunities unlock in tier 2 and tier 3 cities. So we're expanding that. And in the non-recruitment business, our focus, as you know, is to grow top-line growth. Many of you brought that up in your comments. And we continue to be focused on there while we're optimizing some of the operating costs. It's a very competitive environment, and we're focused on those areas as we're trying to sort of find the most optimal way to grow while keeping an eye on the bottom line too. I think there were specific questions linked to the gender ratio that Mr. Yashpal Chopra brought up. And my understanding is our gender ratio is approximately 40% female and 60% men today. Our attrition ratio in the last fiscal year has been about 26%. The previous fiscal was about 33%. So that's another question that was asked. Someone did ask specific question on the number of employees we have, and I think that was Mr. Gautam Nandi. He had asked a specific question related to that, and we had 5,712, as per our understanding, permanent employees today, and about 417 contractual employees, so a total of about 6,129. But at each time that we see this is a moving number. So this is our latest understanding of our headcount. And there could be other areas out there. I think many of you made comments on a hybrid model. Many of you were thankful that we have this virtual model so that we don't restrict our shareholder participation only to people who can physically attend. And we've had people attend from all parts of the country and in some cases from all parts of the world. And I think this model is working very well for us. Some of you said that a hybrid model where you might have an opportunity to interact with us, and we will definitely sort of consider that. There are benefits to that. Technology is something that we're trying to see how it will support a hybrid model, because sometimes you get more disturbances in a hybrid one, but we will definitely evaluate and come back to you on that. I'm very, very thankful. I think you made comments about our technological support team with Swapnil and his team. The support that they provided has been really good today. And again, thank you for those comments. This meeting, thanks to your
all of you also has been conducted in a very orderly fashion. So I think the model overall and the technology seems to be working, and we'll take those comments into account for how we can include more shareholders in future meetings. In terms of CSR, I think there were many suggestions that came through related to road safety, water, supporting of sports, health dispensaries. We have a CSR committee that actively looks at a lot of ideas that come to the table. We evaluate that. If any of you have specific ideas and suggestions, please send them in, and we'll continue to evaluate those ideas through our CSR committee. And if we find them suitable, and if it's one that we feel we can participate in a way that we can manage the governance in an effective way too, then we will want to participate in such initiatives. There was a question whether we have any plans to sell our shares, our investment in Zomato or Policy Bazaar. I can tell you unequivocally at the moment, there are no such plans. We're very, very happy with those investments and the way those companies are evolving. We believe in the future of those companies, and we continue to support our investments there. I hope I have covered all the questions. There could be a potential question that I may have inadvertently missed out on. If I have, please do not hesitate to reach out to us, and we will definitely get back to you within the next 15 days at the very most. With that, I think I have been able to answer, at least in my view, most of the questions. So I will now, in case any, just like I said, we'll respond to you the earliest, and now I will move on to voting and request Jaya to share the e-voting details. Thank you, sir. Members may note that e-voting on NSDL platform will continue to be available for next 30 minutes. Therefore, we request members who have not cast their vote yet to do so within the next 30 minutes. The Board of Directors have appointed Mr. Rupesh Agarwal, failing him Mr. Shashikant Tiwari, failing him Mr. Lakhan Gupta, partners Mr. Chandrasekharan Associates, Company Secretaries, New Delhi, as scrutinizer for scrutinizing the e-voting process. The combined results for remote e-voting and e-voting at the AGM will be declared after the report for scrutinizer is received. The results of e-voting shall be announced after receiving the report from scrutinizer within the stipulated time, and shall be placed on the company's website and on the website of NSDL and communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The resolutions set out in the notice shall be deemed to be passed today, subject to receipt of requisite number of votes. Thank you. And with this, the 29th AGM comes to an end. On behalf of the Board of Directors and the management of the company, I convey our sincere thanks to all members for making the time to join us today and for your continued support over the years. I know many of you have shared, and we are well aware that you've been shareholders with us since the IPO. So thank you so much for that. I hereby declare the meeting is closed. Thank you so much for joining us today.